Hello students, welcome to your maths class. I am Jyoti Sachdeva from SCJ DAV School, Haripura. Today we will start our chapter number 7, Algebraic Identities. In 7th class we already read about algebraic expression. हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पहले ही रीड किया हुआ है. इन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? एक्सप्रेशंस क्या होती हैं कि अगर हम इस तरह लिखें 3x + 7, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन. इफ़ वी राइट 5x, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन. इफ़ वी राइट 1, then it is again expression. 5x plus 3y plus 1, again this is an expression. All these are expressions. And if we write 3x plus 7 is equals to 0, or 3x plus 7 is equals to 1, any number that is in the form of equals, these are equation. अब इक्वेशंस डिफरेंशिएट्स कहाँ से होती है? एक्सप्रेशन से, विद द साइन ऑफ इक्वल्स. जब हम बीच में ये इक्वल का साइन लगाएंगे देन इट इज़ एन इक्वेशन. और उसी तरह आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज आल्सो एन इक्वालिटी. इक्वालिटी के साथ साथ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन वेरिएबल. ओके, कि हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू फिल करेंगे देन इट्स वैल्यू इज इक्वल. Today we will read about the first identity, that is a plus b square. अब ये बनती कैसे है? ये आइडेंटिटी है a square plus 2ab plus b square. We can also write as a square plus b square plus 2ab. And how it form? It is a plus b square. We can write it as a plus b into a plus b. जैसे हम a स्क्वायर होता है तो हम इसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई a. उसी तरह a प्लस b होल स्क्वायर है तो उसी को हमने a प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b. अब ये क्या है? 2 टर्म्स वाली है तो बाइनोमियल है. बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हमने 7th क्लास में सीखा है. Then let's see how to multiply. Its first member multiply with the whole family. A multiply with the a plus b. Second guest meet with the whole family. Okay, मैंने आपको पहले भी यही बताया ना कि 2 गेस्ट आए हैं एक फैमिली में. फर्स्ट गेस्ट मीट करेगा with the whole family, then the second guest meet with the whole family. ठीक है. Now first guest meet with the first member, that is a into a, that is a square. Second member meet with the second, ab. Again this one meets. इसके लिए इजी हम क्या करते हैं? जो वेरिएबल पहले आता है a to z में वो हम पहले लिखते हैं. Now again we multiply it, that is b square. Now it become a square, a plus b, that is 2ab plus b square. With this multiplication we form this identity. अब आइडेंटिटी में इसको हम प्रूव करेंगे कि वैल्यूज में ये इक्वल कैसे होगा. देखो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. Let's take 2 values of a and b.
Let's take A is 1 and B is 2. Now firstly take the left hand side, right hand side. Note, take the equal sign in between. We will prove this. Left hand side is A plus B, that is the whole square. Fill the value of A. A is 1, we take A as the value of 1, and B is 2, fill the value of B is 2. Now 1 plus 2, that is 3, it means 3 square, that is 3 square means 3 multiply 3, that is 9. Now solve the right hand side, that is A square plus B square plus 2AB. Now fill the value of A, that is 1 square. Value of B is 2, it means it become 2 square. 2 multiply value of A is 1 and value of B is 2. Now 1 square is 1, 2 square, that is 4 plus 2 into 1, 2 into 2, that is the 4. 4 plus 4, 8, 8 plus 1, 9. Value of both the sides are equal. It means the identity is true. कि हम कोई भी value fill करेंगे, either we fill in the left hand side or either we will fill in the right hand side, in both the sides we get the same values. Now we will solve some questions related to this. In the first worksheet, first question is find the value, find the following using the identity 1. This is the identity 1 and the first part is 2x plus 5 square. Now here the value of A is 2x, value of B is 5, and then write the identity A plus B square is equals to A square plus B square plus 2AB. Now our identity is 2x plus 5, वैल्यू फिल की, A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 5 इसका स्क्वायर. अब फिल करो आइडेंटिटी में A की वैल्यू 2x का स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2x स्क्वायर, B स्क्वायर इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2AB इट मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 5. 2x का स्क्वायर इट मीन्स 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25 and 2 into 2x that is 4x, 4x into 5 that is 20x, and write it in the descending order of the variable. 4x square plus 20x plus 25. This is the first part. Similarly, we can do the second part, that is 8x plus 3y square. Now in this, value of A is 8x, value of B is 3y. Now write the identity. A plus B whole square is A square plus B square plus 2AB. Now A square is, it means 8x square, B square is 3y square, 2AB it means 2 into 8x into 3y. Now 8x square it means 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, x करेंगे x square 64x square plus 3y square means 9y square. Now 2 8s are 16, 16 3s are 48, x into y, xy. This is the second part. Now let's see the third part. Statement of third part is 3 upon 5a plus 2 upon 3b square. Now A or B already given in the expression. So we take here x. Value of x is 3 upon 5a.
and value of y is 2 upon 3b. Now make the identity in the form of x and y. X plus y square is equals to x square plus y square plus 2xy. Now fill the value. This is 3 upon 5a plus 2 upon 3b whole square. Now fill the value of x square. 3 upon 5a square plus 2 upon 3b square plus 2 multiply x value 3 upon 5b and 2 upon 3b, that is the value of 5. Now solve it. 3 square that is 9, 5 square that is 25 is a square. 2 square that is 4 and 3 square is 9, b square. Now cut the 3 with the 3 into 2 is 4. अब 3 तो कट ही हो गया, 2 को 2 से करेंगे. On the denominator only 5 is there. 3 upon 5 here is a multiply, that is the ab. Now this is the answer of the third part, and the remaining parts we will do in the next video. Thank you.